नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं? जय झूलेलाल, वड़कम, केम छो? आज फिर आपके सामने हम हाजिर हैं अपने स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर। ये जो हमारा आध्यात्मिक और सिंधी वुड के साथ जो चैनल चल रहा है, हमने ओवर 60 एपिसोड कवर कर दिए हैं। हर टाइम हम कोशिश यही करते हैं कि कोई ऐसा शख्स मिले जो कुछ अपनी बातें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बताएं, नॉन फिगर। लास्ट टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जो हमने ऑर्गन डोनेशन पे किया था, काफ़ी लोगों ने सराहा। इस टाइम में आज आई कैन से आई एम अ लकी टू कॉल अ पर्सन हु इज़ अ मल्टी टैलेंटेड वुमन पावर की जो एक्चुअली जो नारी शक्ति है, जो उनका नाम स्पिरिचुअल सोल डॉक्टर मनीषा बोस, शी इज़ विथ अस एंड थोड़ा उससे हम रूबरू कर रहे हैं। लेट मी कॉल हर ऑन अ स्क्रीन। नमस्ते नमस्ते। मनीषा जी, Namaste. वेलकम टू आवर शो। Swadika. सवादी खां Thank you very much for having me here. जी। मनीषा जी, आप को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ध्यान से और इतना करती रहती हैं। और आप एक तो लेक्चरर हैं आप, और प्रोफेसर हैं यहाँ इधर की बेस्ट यूनिवर्सिटी एबैक में। चलो, मैं बताऊं उससे अच्छा मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी, आप कुछ मेरा बताएं। इंट्रोडक्शन ठीक है। मैं यहाँ 19 साल से रह रही हूँ थाईलैंड में। आई एम फ्रॉम जी इंडिया, आई एम फ्रॉम मुंबई, and past 19 years have been very fruitful, beautiful 19 years. I'm a lecturer by profession, and I'm also now chapter head for hashtag Women Power, a global movement which is here. And I also have other interests, which is I love reading. I do a lot of book reviews. These are my interests because पढ़ाई लिखाई कभी खत्म नहीं होती है। बस यही जी मेरे इंटरेस्ट हैं। And I believe that then I have some very passionate, I won't say, yeah, there's some passionate work that I do, which is with a home here, which I've been associated for again 19 years. So that has been my life is very little with my work, home, and doing very few things that I can do within that framework. आपका जो स्लाइड शो देखा, उसमें देखा आप किरण बेदी के साथ भी थी, आपको कुछ सत्कार कर रही थी। वो कहाँ, दिल्ली में जी था या? जी, दिल्ली में था, और वो भी एक वुमेन पावर का शो था। सो आई हैड गॉन देयर वेयर I was very fortunate that Mr. D.K. Bakshi, he invited me there and he gave me the opportunity to re-release her book, and she felicitated me, which was a very big honor because we've all grown up seeing Kiran Bedi. She is she by just being herself empowered all us girls. We were young girls, we were small, and she would give every girl's parents in those times would feel so proud seeing Kiran Bedi. Even when my parents felt so proud seeing her. So she empowered जी। all us women. हम्म। और दूसरा, मैंने अभी स्लाइड शो में वो भी देखा आपने विवेक अग्निहोत्री से भी, जो जी, कश्मीर फाइल सो पे वो थे, यहाँ आए उनसे जी, वो कैसे लगा? यहाँ आए हुए थे। सो उनका इंटरव्यू लिया to talk about Kashmir. This issue has been very close to my heart. बचपन से ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, इसकी बातें मैं घर में अपने पापा से सुनती थी। हम इसका डिस्कशन करते थे, बट कभी नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 विल गो अवे। इट इज नॉट अबाउट, दिस इज टोटली टेररिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी। सो ये तो सबसे बड़ा आघात है किसी भी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के लिए। तो आई यूज्ड टू फील very very passionately for this topic, and that's how when Kashmir Files came, I was very enthusiastic to watch it, and I was very very fortunate that I could get a chance to have a conversation with him ki exactly kya hua. And he had the courage. Again, I feel Vivek ji is a very very spiritual person. He has I Am Buddha Foundation,
जो वहाँ पे वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे, क्रिएटिव कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं, तो उनके हम्म, साथ इंटरव्यू करके बात करके बहुत मजा आया, क्योंकि अ, हमें बहुत कम ऐसा थाईलैंड में रह के मौका मिलता है कि हम ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से इस तरह की बातें करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं नहीं, यहाँ पर चलो ठीक है, उस टॉपिक पे हम नहीं आ रहे। अभी वी कम टू द, आपने जो ये टॉपिक चुना है, नॉरिशिंग द स्पिरिचुअल ओपिनियंस, जी। वो उसका आप डिटेल में थोड़ा बताएंगे, व्हाट ओके, इट मीन्स? देखिए, या सो आई वाज given a choice of topics and said any topic you can choose. हाँ I हाँ thought the only place I could contribute is this topic, हाँ। because I personally, for me, my everybody has their own take on spirituality, and that's how it should be. I हम्म, personally believe spirituality is a way of life. इट इज नॉट, ओके। मेरे लिए वो कोई इज्म नहीं है, मेरे लिए वो कोई फैकल्टी नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एंड दैट्स हाउ वी लिव विथ अवेयरनेस, विथ विदिन द ह्यूमन वैल्यूज, विदिन द ह्यूमन सेंस। हम लोगों में ह्यूमन सेंस होना बहुत जरूरी है, एंड वी आर ऑल born with the human sense, and we continue to live with that human sense. Now people have given their own opinions out of their experience and their education. अब हम उससे, वो ओपिनियंस हैं, हम उससे इम्बाइब करेंगे, एंड वी एनरिच इट, वी नरिश इट. If we like it, we use it. If we don't like it, we leave it, and we use somebody else's opinion. So I found this very fascinating, this topic very fascinating, because you only need to surrender to yourselves. Opinion can be right, can be wrong. तो हम तो इतने अच्छे रिलीजन में, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी born in a religion which allows me, which gives, is very democratic, which allows me to choose even the form of god I need to worship, the thought process. It allows me to argue, so it also allows me to reject opinions and nourish opinion. So I found this topic very attractive, हम्म। so that is आप why I chose this. I just now we talked about Rajiv Malik ji. He is just Yes, an and he's there. I just spoke to you about Rajiv ji. He's an amazing person. He's done a lot of good work, Rajiv ji, on, he's written a lot of books on Hinduism, and he's a journalist. ओके, तो इनको भी कभी शो पे बुलाएंगे जी, डेफिनेटली। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी। चलो वी टॉक मोर ऑन दिस, हमारे टॉपिक के ऊपर जी, स्पिरिचुअलिटी आपको कब से आना शुरू हुई, या आप इंडल्ज कैसे कब से हुई है इसमें? देखिए, मुझे, जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसे सोच के नहीं कुछ करती हूँ कि हाँ ये स्पिरिचुअल है। आई हाँ। जस्ट लिव माय लाइफ, एंड आई पर्सनली फील इफ यू लिव योर लाइफ विद अवेयरनेस, एक हम्म, जागरूकता होना बहुत जरूरी है, एंड सेकंड थिंग इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो आपको एक आत्मचिंतन में रहना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो आई बिकेम वेरी अवेयर somehow of this fact that there are certain values that I need to focus on. And by just living, I have been spiritual. So I've not done anything to be spiritual, but I just felt my path. What is the correct path? I've tried to live. I also have my flaws, which I am very well aware. So, there are things I know I've improved. There are things that I know I need to improve. That awareness is spirituality, where you are aware of your own flaws, your own strengths, your own weakness. और ये मैंने जैसे आपसे कहा है, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक जागरूकता है, और एक always a concept of self reflection. So it is always for me a very, एक आत्म चिंतन का बहुत बड़ा ये प्रतीक है। और मुझे लगता है ये जो दो चीज नहीं करते हैं और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। हम्म। आप इसको कैसे देखते हैं? काफ़ी लोग हैं जो अलग-अलग स्पिरिचुअलिटी को डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं। कोई मेडिटेशन में चले जाते हैं, कोई जाप में चले जाते हैं। मैं हर एक डिफरेंट लोगों से सुनता हूँ, हर एक अपना-अपना ओपिनियन देता है। आपका स्ट्रांगली आपको क्या बोलते हैं, घर में जैसे संस्कार मिलते हैं पेरेंट्स से, तो वहाँ से डेफिनिटली संस्कार तो पहले वहाँ से आते हैं। आपने कैसे ग्रास्प किया?
जी, मेरे जो मेरा जो परिवार था वो बहुत आर्य समाजी थे। सो हम सिर्फ गायत्री मंत्र आता था मुझे, और मैं उसका बहुत जाप करती थी। लेकिन यस, out of my own conditionality, I knew that I have to wake up in the morning, and after my bath I have to say my prayers, which was something very beautiful. We were not imposed. हमें बोला नहीं गया तुम्हें ये करना है, but I would naturally do it. So for me, मंत्र जाप ये सब भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन मंत्र को आप अपनी आस्था से मंत्रित करते हैं। मंत्र आपको कुछ नहीं करता, आप मंत्र में अपनी आस्था डालते हैं। हमें ये लगता है कि हम भगवान के लिए जाप कर रहे हैं, नहीं, हम अपने लिए जाप कर रहे हैं। हम अपना पावर, वी आर इन्वोकिंग आवर ओन पावर, हम उसका आवाहन कर रहे हैं। तो मेरे लिए मंत्र ये है। सो धीरे धीरे जैसे मुझे लगता है मैं बड़ी होती गई, इसमें मुझे ये समझ में आने लगा। सो आई लव माई चैंट्स, आई लव माई मंत्र, आई डू अ लॉट ऑफ चैंटिंग एंड मंत्र विच इज माई पर्सनल स्पेस, बट आई हैव नो फियर दैट इफ आई डोंट डू इट तो बाप रे में मेरा क्या हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है मंत्र कीजिए, लेकिन अगर अपनी आपकी इट इज योर आस्था, आपका भाव है। फिर मेडिटेशन, मैं एक चीज बताऊं, आप since I've been now, it's been 4-5 years that I've been meditating, I feel कि जब तक आपका आचरण सही नहीं है, आपका मेडिटेशन सही नहीं होगा। ये अगर आपका मेडिटेशन सही हो ही नहीं सकता है, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिटेशन, वरना आप आंख बंद करेंगे और आप अगर अपने ही आचरण से खुश नहीं हैं, और आप वी ऑल नो व्हेन वी आर रॉन्ग, so it is, that's what I said, it's a way of living. आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सुधारिए, आपका मेडिटेशन बहुत उत्तम होता जाएगा। it is all about it is all about your relationship with yourself, whether it is mantra, whether it is meditation, all this will lead to you to a very higher self of you. This is what I feel. और एकाग्रत करना है, एक जगह पे फोकस करना एक है। जगह फोकस करना, आप ही अपना फोकस है। देखिए लोग, आप ये सोचिए अब अपनी जी, लोग कहाँ गंगा किनारे चले जाते थे, गुफा में चले जाते थे। सो पीपल वुड डू दैट, राइट। हम नहीं जा सकते, तो हमें अपनी गुफा, अपनी गंगा यही बनानी है, एंड दैट एकाग्रकरण हमें यही करना है। So I feel that everything is interrelated. If your values, if your behavior, if your human sense is poor, you will never have a good meditation, और वो मंत्र भी अर्थहीन हो जाएगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए ही बात करनी है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये अभी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सराउंडिंग जो आपके हैं नज़दीक, कभी-कभी वो भी डिस्टर्बेंस होते हैं या कभी सपोर्टिव होते हैं? My family, मैं see मेरे मैं they, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली बट सराउंडिंग अस। आपका कैसा है घर में? मेरे घर में, हम्म। my house, I mean, see, it's a very personal space for me. तो मैं जी। अपनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप उससे, ये शायद मेरी शॉर्ट कमिंग है, मैं किसी पे थोपती नहीं हूँ, ना बच्चों पे, ना हाँ। मेरे हस्बैंड पे। आई फील they all will find their own way, they'll all find their own understanding and their opinion. Yes, I tell my children pranam kar lo, and if they don't want to do it that day, I don't force them, because it is just a ritual. It's my, as a mother, I need to tell them, but it's up to them whether how they find it. और मुझे ये भी लगता है कि मैं अब ऐसे सोचने लगी हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर हम रिचुअल्स में रहें तो ही हम स्पिरिचुअल हैं। It has nothing to do with religion and spirituality. I feel they are interconnected but also equally divorced sometimes. कुछ लोग हैं जो बहुत रिलीजियस हैं, लेकिन उनको वो रिलीजियस रिचुअलिस्टिक हैं, बट दे आर नॉट spiritual. So the definition of spirituality is something very different. नहीं, मैं हमेशा And बोलता I हूँ think संस्कार religion उसको restrict करता है. रिलीजन अलग ले जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी इज अलग। हम संस्कार और संस्कृति को जोड़ना चाहते हैं कि भाई हम इस संस्कृति में पैदा हुए हैं और ये संस्कार होने चाहिए, और हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को भी वही सिखाते रहें, which is positive way, that's right, like greeting, respecting elders, but same time
हमारे टाइम में ये था कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं बस वही सही है, हम गलत हैं। लेकिन आज के टाइम में, now you're a professor, I want to ask you this question: how is the youth now doing this one, See, taking this responsibility? spirituality, I feel, again, I am dealing with Thai students. Okay, Mm-hmm. my students are Thai, and my Thai students are not essentially, Thai students are not very opinionated. They will not talk and express their opinion about religion. But so when it comes to religion, I really don't know about their opinion on spirituality. It's a very personal space, but yeah, I do see them believing in God, you know, and wearing Buddha lockets, and praying. So I know that they are, and you know how culturally strong they are. But I don't Mm-hmm. know spiritual. Again, spiritual people, you cannot really see the spirituality, you feel the spirituality. So when I see a person who maybe doesn't even realize he's spiritual, but his conduct is good, he's doing good things, he's being useful for himself, for society, I feel that person is spiritual. So abhi Mm-hmm. bachchon mein main honestly, to be very honest, I can tell you about their English skills, their general knowledge, but I cannot tell about their spiritual leanings. नहीं नहीं, जैसा अर्लियर आपने बोला यूजफुल टू सोसाइटी, यूजफुल टू फैमिली एंड Yes. यूजफुल टू सेल्फ, उसके ऊपर थोड़ा आप बताएंगे? अर्लियर वी टुक सम पॉइंट्स, यस। See, the thing is that, firstly, if for me, you balance in life is very important. So if I'm leading a balanced life and I'm doing my duties to my family, so that I'm being useful to my family. Now, once I'm content, I've taken my role as family, then I need to extend it to people who I can be useful for, and be there for them in whatever little capacity, I can be. So अदरवाइज आप सिर्फ भगवान का नाम जाप करते रहें और आप कर्म उसके आगे कुछ करें ही नहीं, तो वो तो उसका कोई मतलब नहीं है. सो व्हाइल यू डू योर जाप, यू डू योर मंत्रा, बट उसके साथ देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेवा. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेवा. सेवा जो एक चीज है, उसमें आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. आप जिसका कभी कभार 108 बार आपने माला नहीं जपी, कोई बात नहीं, लेकिन आप सेवा नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. यू नीड टू डू दैट, अदरवाइज यू कैन बी यूजफुल, यू कैन बी यूजफुल टू एनीथिंग. सेवा मतलब जब सेवा मंदिरों में करनी चाहिए या सेवा कम्युनिटी सर्विस में करनी चाहिए, घर कहीं बड़ों को भी, छोड़ देते हैं जी। कहीं भी. अब of course you start your seva from home, as a like, I can only tell you my experience, I can only speak about my experience. So if I'm not useful for my family, how will I be useful for my work? So for me, everything is spiritual. So you be useful to your family, then you'll be useful to your work, you can take that extra pain for your students, then you go and do social. Now social work आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है आप मंदिर में जाकर लोगों की सेवा करें या लंगर में सेवा करें, that is also a seva. You go जी, and do, like for me, I feel a lot for children who are home, who don't have mother, father, who are orphans. I feel very deeply for them. So I channelize the seva there. I feel very deeply for underprivileged women. So I channelize my energy there. It's up to everybody's calling, and that is my calling. But yes, do something totally selflessly. That's a biggest human sense we can develop in spirituality. आपके स्लाइड शो में मैंने देखा आप किस 3-4 बच्चों के साथ बैठी हैं, दूसरे फोटो में काफ़ी थाई बच्चे बैठे हैं, वो क्या हैं? अच्छा, वो एक यहाँ पे एक ऑर्फनेज है, चिल्ड्रंस होम है, उसका नाम है हुँ, बानुरा. वो यहाँ से करीब 6 घंटे दूर पे है. तो ये हुँ, एक दीदी है, दीदी देवी माला. शी रन्स दिस होम. शी स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट वन चाइल्ड, एंड शी इज एन इटालियन लेडी. उन्होंने इंडिया से दीक्षा ली थी और वो यहाँ पे आई थी बर्मा जाने के लिए, लेकिन वो हुँ, हुँ, उस पहुंच नहीं पाई. अब इसको 30 साल हो गए बानुरा को, पहुंच नहीं पाई, तो वो इसी तरफ रह गई.
बाढ़ आई और किसी ने आके उनको एक बच्चा दिया और बोला इसको संभालिए। तो उनको तो संभालना आता नहीं था, वो यंग सी लड़की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सॉरी इसको देख नहीं सकती हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो बच्चा उन्होंने वापस कर दिया। और रोज वो रात को उस बच्चे की आवाज रोते हुए सुनती थी। और एक हम्म। दिन उनको वो आवाज नहीं आई, तो किसी ने कहा वो बच्चा मर गया। ओहो। She was devastated, and then हम्म। on she never says no to children. अभी भी 2 हफ्ते पहले एक नया बच्चा आया है। अच्छा, और ये जो ऑर्फनेज है यहाँ पे करीब 150 बच्चे हैं, और मैंने इन बच्चों को 19 साल से देखा है। तो छोटे छोटे से लेके अब उनको टीनेजर बनते 20 साल के होते भी देखा है। एंड दे आर अमेजिंग चिल्ड्रन। ये मेडिटेशन करते हैं, ये जाप करते हैं। इनका एक दीदी के गुरु है, उनका जाप है बाबा नाम केवलम, कि सिर्फ बाबा का नाम ही केवल उत्तम है। तो वो बच्चे सुबह, छोटे से छोटे बच्चे, और देखिए 150 बच्चे हैं, हार्डली शी हैज चिल्ड्रन विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। शी हैज चिल्ड्रन जो बाद में आते हैं, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में माँ बाप छोड़ जाते हैं। दीदी ऑल्सो सेव्स पीपल फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वो लड़कियां, हम्म। उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट क्योंकि ये बच्चे ने शुरू से मेडिटेशन किया है, दे आर दे एंड दे आर अ वेरी कंटेंट चिल्ड्रन। सो ये 6 घंटे दूर था, तो इनको एड्स नहीं पहुंचते थे। क्या है बैंकॉक, इन थाईलैंड बैंकॉक इज द biggest city and is the richest city, so things would not reach them. Today, like, people know about Banun Rak. I always use this platform to talk everywhere that I can in whatever little capacity. I still remember jab main Banun Rak se I was introduced, I had just come in, and I wasn't even earning my money. So I met Didi, and bas tab se wo ek जुड़ाव हो गया। I used to go to everyone's house, pick up their old things and send it. हम्म। At that time गाड़ी ड्राइवर भी नहीं था, नए नए आए हुए थे। आई टू टेक टैक्सी एंड गो टू सो मेनी होम्स। आई डिडंट नो द लैंग्वेज, क्योंकि हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हमारे घर से 2 घरों को का सामान निकल आता है, स्पेशली मोस्ट इंडियन होम्स। So those kind of things started happening today by God's grace. People know about Banundrak, but they always need things, they're always in need of things. But that is where my heart is, and that is something that gives me immense joy, हम्म। to do anything for them. It's my calling, maybe, for these children. जी, मनीषा जी, मैंने भी हमारी लायंस क्लब में हमारी जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थी आकृति जी, वो भी ये इसी एसोसिएशन से, इसी क्या बोलते हैं ये, ओल्ड एज क्या बोलते, चिल्ड्रन होम मान उनराक में, वहाँ पर काफ़ी डोनेशन की हुई है हमारे लायंस क्लब की तरफ से। I और know. विद या बैंकॉक में जितने भी हैं और इस चैनल से सुन रहे हैं, प्लीज़ इफ़ यू हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा इन योर होम, do contact us, me or Dr. Manisha. So we'll send it there. डॉक्टर बख्शी को एक सवाल है, आप पहले उनका सवाल का जवाब भी दे दें। Can you read on screen? I do my work to the best of my capability and integrity. Is this not? It is spirituality, and this is what I mentioned because you've joined in late. So I said spirituality is a way of life. It is not. Mhm. So even if you're doing your work with integrity, the whole idea is to stick to the human sense, and you are sticking to your human sense. So you are spiritual. I hope Yeah, well, Mr. डॉक्टर Bakshi answered your question. जी जी, he said throw some lights, तो लाइट Yeah, तो so डाल this is दिए the आपने। light. You're right. या You're on the right track, Mr. Bakshi. जी 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 जी, अभी I see so many women around nearby and most of them they talk about spirituality. मर्दों को भी स्पिरिचुअलिटी आती होगी, और आपके हिसाब से कौन, लेडीज या जेंट्स को ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है? Okay. See, to be very honest, as I told you, spirituality is about self awareness. Now, a हम्म। woman, from her menstruation to her menopause, she is most aware of her body. She's most aware of her emotions. Because, for a man, these are very small things. But for a woman, she goes through a lot of, in every
every phase of her life. She goes through a lot of emotional changes. She goes through a lot of physical changes, So the way she gets connected to herself, she's very naturally and very profoundly spiritual. Way more spiritual and connected than a man is to himself. A man needs to work harder to achieve that awareness, while a woman naturally, organically has this awareness. Now, I'll give you a very small example. When a woman gives birth to a child, she gives birth to a child, physical pain that she feels she's going to die giving birth to the child, but she gives birth next to the child also. She's in pain. Her body is in trauma emotionally, but she only worries about her baby. She's only looking after the child. She still does not sleep for days, till the baby is fed, till the baby is changed, till the baby is a little grown up. तो ये सारी चीजें आपको अपने आप से इतनी कनेक्टेड करती है. दिस इज सच एन अनकंडीशनल लव. एंड इवन women who have not given birth to children, they are also very spiritual because they are created by God like that. So what I'm saying is, of course a man can attain spirituality with his conduct, with his awareness, but a woman is very natural at it, and that is why उनका ये झुकाव अपने आप होता है. So even if she's constantly only looking after, I feel that, and this is only my perception. I go to work, my husband goes to work. Okay, I have also long hours of working. I would leave at 5:30 before, a few years ago, and I would come home by 6:30. Today I leave at 7, I come by 7, but it is I who's thinking about food, about cooking, about my son is going to have, long day, so his food should be what. My husband, it's not that he's also a good father, but when it comes to nurturing, it doesn't even click him. So these are things, this makes women way ahead of men spiritually, but men also can work hard on themselves because it's an ongoing process. So they are a little ahead. You can catch up definitely. राजीव मलिक जी आपसे पूछ रहे हैं, प्लीज गिव ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ इंटरव्यू. ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं हूँ. No, he's taking my interview, Rajiv ji, so he will talk about himself. I am not here to take नहीं, his interview. जी जी. Yes, मैं Papni ji. जी, मैं बैंकॉक में तकरीबन, ओके, खास राजीव जी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बैंकॉक में तकरीबन 45 साल से हूँ, सिंस 75. अपने बड़े भाई के पास आया था काम के लिए और यहीं पे रह रहा हूँ. उसके बाद स्पिरिचुअलिटी तो हमारे पूरे घर में है. एज मनीषा नोज दैट, ओके, पीटर मेंशन में हम डेली, ऑलमोस्ट डेली आरती होती थी और जो भी फेस्टिवल्स होते थे हम वही सेलिब्रेट करते थे वहाँ पर. सो मुझे बचपन से ही रुझाव है इस तरफ स्पिरिचुअलिटी में. फिर अभी ये जो पेंडेमिक हुआ, लोग घरों में बैठे रहे, तो उसमें से काफ़ी लोगों ने बोला चलो ठीक है कि आरती क्यों नहीं कर रहे हो, लोग क्यों नहीं मिलते हैं. तो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म तो इंटरेक्ट विद द पीपल. तो मैं बातें क्या करें, हम आपस में फ़ोन पे बात करते हैं और हम सिर्फ 2 जने देखते हैं और सुनते हैं खाली. तो मैंने ये फेसबुक और यूट्यूब का माध्यम चुना, वेयर वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. एक दूसरे को व्यूज़, सवाल पूछते हैं, कोई अपने व्यूज़ देते हैं और लोग देखते हैं और काफ़ी लोग जुड़ते गए. आज 60 एपिसोड हो गए हैं. आई थिंक मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस बैठा रहता हूँ अपने घर में. जो अच्छे काम करने हैं वो करते रहते हैं. आई एम कनेक्टेड विद द सोसाइटी. दैट्स इट. जी, मनीषा जी, आज आपका इंटरव्यू है. मैं अपनी बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन चलो ठीक है. तो आप अभी अपने सब्जेक्ट को थोड़ा एलोबरेट कीजिए थोड़ा अभी. और कुछ है? किस सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे? हमारा नॉरिशिंग द जी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. ओके.
Yes, nourishing means you have to keep, as I told you, when we speak about nourishing your own self, you need to be in a constant state of self awareness, constant state of self reflection. And you, like for example, the the way I have grown, and the day I did realize that okay, I have grown and I've understood spirituality, was the day I dropped my fears. Mhm. There has I have become more fearless by nourishing my own opinion on others' opinion on spirituality. This This is powerful. fearlessness Yes. has come. Pardon? Yeah. नहीं, तो the ये point is एक very good. Yes. या तो ये एक fearlessness आई है मुझ में, जो I'm if I don't do my chanting one day, I am not conditioned in a fear. आई एम अ वर्किंग वुमेन, देर आर टाइम्स अष्टमी के दिन ये पूजा इस समय नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, उसका ये मतलब नहीं है माँ मुझसे नाराज हो गई है, शी रिसाइड्स इन मी, एक तो Mhm. ये टाइप की फियरलेसनेस है। दूसरी फियरलेसनेस है लूजिंग एनीथिंग। आई एम Mhm. नॉट fearful of losing anything, whether it is my job, whether it is relationships, whether it is anything. I don't know why there is no fear in me, because I, again, even saying a no, I think as a woman the सबसे बड़ी चीज मुझ में बहुत easily आई है काफी सालों से, is to say a Mhm. no. I'll give you a small example. यहाँ पे Mhm. आपको पता है ये hashtag women power program किया था. Of course जी. there were wonderful people, and I'm very and Mr. Bakshi luckily is a very very democratic person, so it's easier to deal with him. But there are also many people whom I've done programs so far, and they would be alarmed by my ability to say a no and to stick to my opinion. So, they would be like, oh, she's tough. A woman who says a no is tough, but a man is not. But the clarity of thought, that I have, that this is what I want to do, it definitely comes from a spiritual space. It doesn't come anywhere else. So, these are things that fearlessness, the ability to say a no, is the first thing that comes when you have, nourished your own and others' thoughts of spirituality. And second thing that I personally feel that has really empowered me is the whole Vedanta philosophy, that you are not, your religion is not authoritative, your existence cannot be authoritative. You only have to depend on your internal strength. No external factor can bring you an internal strength. Only you Mhm. yourself can bring an internal strength. And I think that thing has been a very, very empowering factor to me in my life, to chisel my own internal strength. Everything comes later and after. So, these are factors where I felt like, you have to build your own inner guru. You have to listen. आप 10 गुरुओं को सुनिए, आप इतनी किताबें पढ़ डालिए, लेकिन जब तक आप अपने इनर गुरु को नहीं आप इन्वोक करेंगे, आपसे कोई एक्शन ही नहीं होगा। मैं बहुत एंड आई हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर on spiritual path, but their knowledge remains bookish. They are Mhm. not able to imbibe the knowledge. That knowledge does nothing good to them. So this is what I मैं feel कि आप क्या इस बारे को वे बोलिए। बोलते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। हाँ, तो वो तो बात ही नहीं हुई ना। आप गुरु को मानिए, गुरु की मानिए, और एक और चीज मैं बताऊं पत्नी जी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट आई लव द गुरु कल्चर, और आई थिंक हमारे में जो गुरु कल्चर है, वी आर ब्लेस्ड टू हैव इट, बट स्टिल योर गुरु विल नेवर नो योर इनर सेल्फ. You will never expose yourself 200% to your guru, but you will always know yourself. So the ways after a point आपके गुरु की सुन के आप अपने आप को खुद ही गाइड करेंगे. So these are things, these are values that we should constantly work on. And spirituality तो is a process which is your own inner journey. आप अपनी inner journey में हमेशा रमिए, हमेशा रिफ्लेक्ट करिए और देखिए बिगर इट्स एन पिक्चर. जैसे एक्सपीरियंस। फॉर यू,
this is a journey, Mr. Papni. I know you now for so long. I had always seen you. Uh, See, I was not impressed because you would uh, conduct so many pujas, but I was impressed because all the spirituality was seen in you. Your not only you, your both your daughters and your family, they were so respected. Everybody loved you all. आपके वो आचरण में दिखता था. वो स्पिरिचुअलिटी होती है. सिर्फ हुँ। पूजा करना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है. तो आपके आचरण में दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, जो दिखता था. So somewhere you are on the right path, and that's why you are here doing what you are doing and having conversations on it, trying to change narratives. जी, वो तो है, मैं इसी बोल रहा हूँ, मैं खुद करूँगा, तो बच्चे दे फ़ॉलो। जो संस्कार संस्कृति जो है, संस्कार जो मिलते हैं, वो पेरेंट्स से मिलते हैं या दूसरों से मिलते हैं। तो बचपन में तो बच्चे तो पेरेंट्स को ही देखते हैं या फ्रेंड्स को देखते हैं। एक टाइम आता है तो दे दे नो पेरेंट्स आर नॉट राइट, माय फ्रेंड्स आर राइट। तो एक टाइम आ जाता है। लेकिन जब वो अपनी जीवन में आते हैं, जीवन में मतलब शादी हुई, बच्चे हुए, तो एट दैट टाइम दे से ओह! माय मदर यूज्ड टू डू दिस वन, माय फादर यूज्ड टू डू दिस वन। एट दैट टाइम वो उनको पूरा फ्लैशबैक आता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे करते थे। अगर हमने उनको सिखाया ही बिगिनिंग से गो डू व्हाटएवर यू वांट, तो वो नहीं सीखेंगे और हम उनके सामने नहीं करेंगे। बचपन में हम उनको टेंपल में नहीं ले जाएँगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे, किसी क्या बोलते हैं ओल्ड एज होम में नहीं ले जाएँगे, कहाँ पर सेवा नहीं करेंगे। बच्चों बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है पेरेंट्स को, तो दे विल नॉट फॉलो। तो एक कॉपी करते हैं हम ज़्यादातर, तो सोसाइटी में करना है तो चिल्ड्रन दे फॉलो अस। उसके लिए एक एग्जाम्पल होना था। जैसे प्रीचिंग खाली करो, प्रैक्टिस नहीं करो, वो भी सही नहीं है। और दूसरी बात, मेरा मेरा जो मानना, खुद का मानना है, एजुकेशन इज़ नॉट गिवन, इट्स टेकन। इट्स लाइक अ माइंड इज़ लाइक पैराशूट, राइट? जो खुलता है फिर काम करता है। अभी यहाँ पर मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सीख भी रहा हूँ, लेकिन जो मेरे थॉट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। Yeah, of course. जी, जी। So it's also no, and children, अगर आपका खुद का conduct, as you rightly said, will rub onto your children, and they are also born with their own sanskars, and they will do what they want. Like, I don't even have that fear that my children will not be good in their conduct, or they will not do good. They will find their way to do good, the way I found my actions, where what gives me happiness. और पता है, ये जो spirituality है, आप में प्रेशर नहीं लाना चाहिए. जो मैं बहुत हुँ, बार देखती हूँ, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, वो प्रेशराइज रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें मेडिटेशन इतने घंटे करना है. टेक इट जॉयसली, बी जॉयफुल. हमारा पूरा जो, इफ यू सी, वेदांता फिलॉसफी इज ऑन जॉय. इट इज नॉट ऑन दुख. Joyously. हुँ, Dukh bhi aaye, try to find and move joyously. So this is what spirituality is. It should be a joyous process, not a pressurizing process to your own self also. हुँ, हुँ। That is very important. You spoke about Vedanta. Can you highlight on that? Vedanta में आपने See, कौन-सी whatever little I have read on Vedanta, I have just fallen in love with that philosophy, where हुँ, it हुँ, gives you so much freedom, so much liberation. In fact, I was reading this. There is a book called Vedanta Treatise, and I think everybody should read. It is by Partha Sarthi, and this book talks. It talks so practically. It doesn't talk about religion. It even, to be honest, Parthasarthi even says you don't need religion, you don't need guru. All you need is your own self. And हुँ, somewhere it resonates with me, where it's not that I don't have pray to God. That is my relation with God, my space with God, but it is all about myself. So this is what the Vedant philosophy is. Iske baad aaya religion. So just Sanatan Dharma hai, that is Vedanta philosophy. हुँ, हुँ। सनातन धर्म। Yeah. So for me, I don't like to be jacketed. I feel spirituality आपकी spirit को free करती है. और हम हुँ, सबको हुँ, पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है. Tell me, हुँ, हुँ, any guru you listen, how can they talk the same and common things? Because it's a universal truth. ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे को सिखाना कि तुम चोरी मत करो.
ये पता है हमें ना कि चोरी बुरा है, पड़ोसी को मार डालना ठीक बात नहीं है, हर चीज हमें पता होती है, बस इस पे अमल करना इज इम्पोर्टेंट एंड जस्ट डू इट. सो दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज ओनली गोइंग टू टेक यू टू सम प्लेस. आप कितनी भी घंटी बजाते रहें, लेकिन जब तक आप अपने व्यवहार में वो नहीं लाएंगे, कोई फायदा हम्म, नहीं होगा. दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू. आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे हैं, बच्चे के साथ कैसे हैं, अपने पति के साथ कैसे हैं. If I am not there looking after my house and I have spent the whole day only in a temple and neglected my family, am I spiritual? That is not नहीं, spirituality. जी जी, अंजलि जी यूएसए से आपके लिए मैसेज भेज रही Yes, she's so lovely. I know she is a Sai devotee, and I'm so happy to read her message. हैं। जी 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 जी, अभी तभी तो लोग हमने भजन में मस्त होते हैं, गाते हैं, नाचते हैं. That's what the religion is about and spirituality is about. वी हैव सो मच वैरायटी, हम अगर सोमवार से शुरू करें संडे तक कुछ ना कुछ होता रहता है, और बैंकॉक में तो फैंटास्टिक, आई सीन सो मेनी प्लेसेस, एवरी डे कुछ ना कुछ है ही है। और मैं कहीं नहीं जाती हूँ. आई डोंट नो एनी प्लेस, आई डोंट गो एनीवेयर, आई डोंट गेट द टाइम to be and see anything. So even I would when y'all used to have those bhajans and all that time, my son was very small. So हम्म, I remember on Tuesdays you would have the puja, aarti hoti thi. That was my जी, son's dinner time. So I हम्म, have hardly attended. किसी दिन उसने जल्दी खा लिया तो मैं उसे ले आती थी. That's why you've hardly seen me in that way. I think आप मेरे घर आए थे जब मेरी डॉक्टरेट मैं आई जी ही जी थी शायद, आफ्टर माय जी डिग्री. जी 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 जी, तो उस टाइम से आपसे वन टू वन बात होने चालू होगी। देन जी. रिसेंटली जो इनफैक्ट आपने पप्पू शो जी, किया है। जी, yeah, Bappu ji, one more thing I would like to tell people who are listening to me. One of the most earliest spiritual experience for me was doing my PhD, not even my children's birth, you know, because it was such a, yes, spirituality, according to me, is a very हाँ हाँ, solitary journey. It is, हम्म, ये आप कितने भी संघ में रहे, आप किसी भी गुरु के पास रहे, वो आपकी अपनी अकेले की जर्नी है, बिटवीन यू एंड योर डिवाइन. आप जिसको भी अपना दैट्स राइट। डिवाइन मानते हैं, वो आपकी और उनकी जर्नी है. इवन वेदर यू आर विथ योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, but it's your journey with your divine, right? So for me, my PhD was literally like that, because it was solitary. I was going through my own emotions, and I could feel I was sitting here and doing my thesis from Mumbai University. It was not easy. I had to go 4 5 times to India to meet my guide. And I used to think कि यार इंडिया में लोग रहते हैं और उनसे डॉक्टरेट नहीं हो पाता है, मैं यहाँ बैठ के मैंने हिम्मत भी कैसे की करने की. So all those kind of things I went through, the emotional ups and downs and all alone, because I किससे मैं डिस्कस करूं और किससे मैं शेयर करूं what I was going through. I was in a country which is not English speaking. There was no library. So I used to write to libraries. बुक्स मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आती थी, उनको मैं फोटोकॉपी करती थी, और मैं एक ऐसे ऑथर पे कर रही थी जो इज वेरी डिफिकल्ट ऑथर. So not too much had been written. I did my PhD on stylistic analysis of Salman Rushdie's text. Now it's a very he's a postmodernist, post-colonial writer. तो देखिए ये पोस्ट मॉडर्न राइटर पे भी लिख के thesis करके, I felt it was a very spiritual experience where when I got my degree, I said, this is a divine blessing, because how I managed it. And it was not easy. I was 5 months pregnant जब मैं वाइवा के लिए गई. So all this thing was along with my internal strength. There was some also a combination of some other strength as well. So that has been the biggest spiritual experience for me, was my PhD. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आई थिंक जो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो खुद को रोके नहीं, कंटिन्यू करते रहें। एंड अगर आपको दिल है, डेफिनेटली गो अहेड। मनीषा इज एन एग्जांपल। कुछ भी हो, आप आपसे वो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ले सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ रही हैं सिमरन जी, मिस इंडिया 2013. Very soon she will be on with us. She's listening to us. She's so lovely. Yeah, she I had is. a chance to meet her. Let's welcome her. Simran ji, I guess you are in a car. Where are you heading? Your microphone is off. Simran ji? I'm on the highway. I had my shoot not today, so I was at Fazlani. But at first, a very warm hello and a hurry home to two beautiful souls who are here on screen. And Yes. Hi, I'm so Simran. So happy lovely to see you. and delighted. A lovely hello to you. I'm so happy to see both of you here. We are on the Your highway. car is We can't moving. I hear think your anywhere. voice is cracking. Yeah. Tell you, I'm really Connection is not so good. I know you are in have highway. a place at the car, and I Hello, Simran ji. Hello, Simran ji. The net is not so clear. Can you yes, repeat? yes, I'm listening to you. Hello, Simran ji. Okay. At least उन्होंने झलक दिखाई, आए, हाईवे पे हैं. घर पे होते तो डेफिनेटली वन टू वन बात होती कि इंटरनेट वीक है ऑन द रोड. जी, मनीषा जी. इनको फिर बुलाएंगे थोड़ी देर में. हाँ, यस, कंटिन्यू. Okay. No, I don't remember what I was saying. Oh, बख्शी जी बोल रहे हैं उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया. आई थिंक बख्शी जी, उन्होंने आई थिंक सुना यू नहीं. नहीं, आई थिंक यू हैव टू रिवाइंड our episode and you see Manisha did reply to your question. लेकिन Yes, फिर भी Mr. जवाब. Bakshi, I did reply to your question. ओके, चलो. Yeah, we have certified you as being spiritual. That's what your question was, right? That's right, yeah. चलो. It was a wonderful share. You shared wonderful journey of you and nourishing the spiritual opinions. और कुछ दूसरे भी आ रहे हैं. ओके. Naina Malan, very impressive, Manisha, spiritual journey. Okay. Yeah, true. It should not be exactly as she wrote. It should not be complicated. And Mr. Papni, since I read a lot of things, and I'm not saying because I read, so my opinion is right. But in my opinion, and this opinion also should be nourished by people, that it is simple. Keep your spirituality simple. I see people complicating it too much. And they take this Mm-hmm. whole thing that I'm spiritual, I'm on a path so seriously that they forget the essence of the joy that they need to be while being spiritual. I mean, this is what my take is in life. So I want to be happy and joyous. I'll give you an example. Like if you see Sadhguru, okay, जी. Sadhguru, everybody's marketing today. Everybody's marketing their spirituality. Some people you love to listen, some people you don't enjoy listening. So when you listen to Sadhguru, he's joyously talking about it. So he sticked so well with people because he's very joyous about it. That's what spirituality should do to you, and not, you know, weigh you down with this whole idea that, oh, I'm spiritual, I have to be on this path. And don't judge yourself. We judge ourselves. We need to self reflect. Judge matlab aapne verdict de diya. अरे हाँ, मैं हाँ. तो बुरा हूं, मैं दूसरों तो छोड़ ही दीजिए, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं. आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि अच्छा मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं क्यों नहीं मेडिटेट कर पा रहा हूं, या मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा हूं. That is the difference between being spiritual. You don't be judgmental to others and to yourself, and be जी, only self reflective. that's right. Very well said. Yes, Kishore is also, he's from Spain. Kishore Lalwani, he's listening from there. Yes, very good. जी,
मनीषा जी, वेरी वेल। आपने जो भी शेयर किया बहुत अच्छा किया। आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज जो ज़ाहिर की, लोगों को डेफिनेटली पसंद आ रही है। इसमें जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं। जिन जिन ने मिस किया है, definitely they can see it again. It's already documented there on Facebook and YouTube. With this one, I like to say good night, and we'll see you on next Thank you. Tuesday. Namaste. Swadika from Thailand. जी, सवादी खाप from Thailand. Yeah, that's right. आप सवादी खा, मैं सवादी खाप कह रहा हूँ जी। Yes. जी जी। And lovely Okay. to be here, Mr. Papni. And it's always nice talking to you or even meeting you personally, though we hardly end up meeting, but it's always a pleasure to see you. जी जी, thank you very much. चलो, okay, bye. Bye.